आई होप मैंने एक लिंक शेयर की थी आप सबको सुबह ऑलमोस्ट, जिसमें जो है वो मैंने यूट्यूब की एक लिंक थी, जिसमें मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया था कि कैसे जो है वो बेसिकली गेस वर्क या कैसे जो है वो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स काम करती हैं इन एक्चुअल एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम। तो बेसिकली ये कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मैंने सोचा है, जो मैंने डिजाइन किया है, वो ऐसा है कि हम लोग पीवाईक्यू की हेल्प लेंगे। एंड बाय दैट हम लोग जो है वो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स ऐसे जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से यूपीएससी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, प्रीलिम्स को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो सी, आई थिंक वी हैव पीपल फ्रॉम बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, सो दिस विल बी अ बाईलिंगुअल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में शिफ्ट कर लूं, बट थोड़े हिंदी वाले लोग भी होते हैं तो उनको भी केटर करना होता है। सो प्लीज थोड़ा यू विल हैव टू मैनेज अ बिट। So yeah, so where was I? So yeah, so this कोर्स की जो इस कोर्स की जो डिजाइन है वो ऐसी है कुछ कि बेसिकली पीवाईक्यू की हेल्प लेंगे। उससे वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द टिप्स एंड टेक्निक्स, एंड देन फिर मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 2022 और 2023 के पेपर में वो अप्लाई की थी इन एक्चुअल कंडीशन। उससे बेसिकली आपको सिर्फ ये नहीं आइडिया लगेगा कि वो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सिर्फ वो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी कि कैसे वो रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। तो ये कोर्स की डिजाइन है। तो अभी आज जो सेशन है, दिस इज बेसिकली टू गिव यू अ फर्दर आइडिया। जो आज मैं कम से कम दो तीन टाइप्स की टेक्निक और बताऊंगा, उसके काफी एग्जांपल्स लिए मैंने। सो दोस एग्जांपल्स विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे वो अप्लाई होती है इन द पास्ट यूपीएससी एग्जाम, एंड सब्सिक्वेंटली वो कैसे लगती हुई आई है। तो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन द कोर्स। तो ये बेसिकली आपको फेमिलियर बनाने के लिए है। जैसा मैंने पिछले यूट्यूब सेशन में बोला था कि दिस विल कि ये टेक्निक्स और टिप्स आपको बस हेल्प करने के लिए कि आपके मार्क्स जो है वो 15-20 मार्क्स आपके या 25 मार्क्स आपके बढ़ा दें। जो आपका मेन बेस बनेगा मार्क्स का, इन फॉर विच विल इंश्योर कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज बेसिकली योर ओन प्रिपरेशन, जिसकी वजह से आप 80-90 मार्क्स आप अपनी मेहनत से लेके आते हो। एंड देन दीज टेक्निक्स एंड टिप्स हेल्प यू टू फर्दर एनहांस इट बाई लेट्स से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। जो भी आप जितना अच्छे से उसको मास्टर करके प्रेशर सिचुएशन में लगा पाते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड माई कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। लेकिन वो जो बेस 90 बनेगा, जो नॉलेज बेस जिसकी वजह से ये टेक्निक्स लगती हैं, दैट यू विल हैव टू बिल्ड ऑन योरसेल्फ। वो आज मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि वो नॉलेज बेस कैसे आपको डेवलप करना है, व्हाट सोर्सेस यू हैव टू रेफर, क्या आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से बेसिकली यू विल बी एबल टू रीच टिल द स्कोर ऑफ 80-90 और मे बी मोर देन दैट, जो नॉलेज बेस आपका सॉलिड बनाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So this is about me. I have done BTech from IIT Kanpur. I got selected in 2022 exam. I hope you have got the introduction. तो पॉलिटिकली जो सोर्सेस हैं वो बेसिकली ये हैं कि लक्ष्मीकांत तो सबको पता होता है कि पढ़नी है। देन बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है। बेयर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक रफ आइडिया आपको लेना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। देन इंडियन एक्सप्रेस, आई विल रिकमेंड कि एक यू शुड रीड वन न्यूज़पेपर एटलीस्ट, लाइक आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि बहुत छोटा न्यूज़पेपर होता है। आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट जिसको जो है ना वो वैसे होता है ना कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का मन होता है। आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, बट आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग कि इंडियन एक्सप्रेस का जो है वो आप पढ़ लो। उसमें सब मत पढ़ो, लेकिन एक्सप्लेन पेजेस आर गुड पेज, जिससे एक दो क्वेश्चन बन के आते हैं, दैट माइट हेल्प यू। आपका हो सकता है एक नंबर से जो है वो प्रीलिम्स अटका हो एंड उसकी वजह से निकल जाए, क्या पता। सो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि स्पेशली जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं, दे फेस डिफिकल्टी इन रिटेंशन ऑफ द लक्ष्मीकांत, बिकॉज इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि बहुत ज्यादा चीजें, बहुत से कंफ्यूजन आने लगते हैं, डाउट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं। सो फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड कि आप जो है वो मॉक टेस्ट हो काफी। मॉक टेस्ट विल हेल्प यू इन इंश्योरिंग कि आप जो है ना, जब गलती करके आप सही करते हो, आप उसका सोल्यूशन पढ़ोगे, दैट विल रिटेन इन योर brain. So basically you will be able to make that questions right in exam or in next mock test you are giving. So टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटी का है। आगे हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो स्पेक्ट्रम तो सब लोग पढ़ते ही हैं, तो बेसिक बुक्स है। लेकिन जो आपको एच देगी अभी आज के टाइम पे, जो मैं देखता हूँ जो एच देती है, वो है क्लास 12 की थीम्स, जो एनसीईआरटी की जो 3 थीम्स हैं, इसमें एंशिएंट और मिडीवल भी इंक्लूडेड होता है। वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी स्पेशली आई विल से कि यू शुड फोकस ऑन मैथ्स। मैं अभी आज जो है वो आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पे।
कि मैंने कैसे जो है वो मैप्स की स्टडी की थी। दैट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आपको खुद से जो है वो बेसिकली देखना पड़ेगा, आप खुद उससे बेटर भी बना सकते हो। तो वो चीज़ है। उसके बाद जो थीम्स के चैप्टर्स हैं उसके एंड में जो है ना वो सब में क्रोनोलॉजी दी गई है। दैट क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर ऑलमोस्ट अभी तो ऐसा हो गया लाइक फ्रॉम 2020 आई एम सीइंग कि हर एग्जाम हर फिल्म्स में एक से दो क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजी पे आते हैं कि ये वाला पोएट किस टाइम पे था, या ये वाला जो फॉर एग्जाम्पल कबीर के ऊपर क्वेश्चन था कि वो किस टाइम पे थे, उनके साथ में उस समय कौन कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे उस समय अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी ना तो आपसे नहीं हो पाएंगे। सो टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू गेट दोस थिंग्स राइट, यू हैव टू फोकस ऑन द टाइमलाइंस गिवन एट द बैक ऑफ एवरी चैप्टर। फिर जो है वो थीम्स में जितने भी डायग्राम्स बने होते हैं उनको उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें उसके नीचे कुछ लिखा होता है, उससे भी क्वेश्चन काफी बार उठ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 एक क्वेश्चन आया था कल्याण मंडप का, और वो क्वेश्चन जो है वो शायद थीम जो सेकंड थीम है उसमें जो है वो बेसिकली बना हुआ था कल्याण मंडप। उससे जो है वो सीधे वो बस किसी ने डायग्राम देखा हो एंड वो डायग्राम देख के वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो फोकस ऑन द डायग्राम एज वेल, उससे भी काफी काफी चीजें उठ के आती हैं। तो यू कैन डू दैट। उसके अलावा जो एनसीईआरटी है क्लास 6, 7 एंड 8 दैट इज ऑल्सो गुड। इसमें भी एंशियंट मिडीवल इंक्लूडेड है। तो उसमें 6, 7 जो है 6 वाली एंशियंट है, 7th वाली मिडीवल है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। ये बेसिकली आपको पढ़ना है ऐसे कि स्पेक्ट्रम सबसे पहले करनी है, देन यू हैव टू डू क्लास 12। बिकॉज सब्सिक्वेंट जब आप पढ़ोगे ना तो नीचे वाले जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत कम टाइम लेती हैं। आप उससे स्टार्ट करोगे तो आप पता चला कि एक हफ्ता एनसीईआरटी चल रही है। तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, पहले सबसे मेन चीज पे टारगेट कर लो कि स्पेक्ट्रम पढ़ ली या फिर मेन बुक पढ़ ली, एंड देन यू आर रीडिंग दिस जस्ट टू एंश्योर कि आपका नॉलेज बेस जो है वो वाइडन हो एंड यू आर एबल टू गेट 1 और 2 क्वेश्चंस राइट। तो ये आपका मैंने मॉडर्न का बता दिया। एंशियंट मिडिवल के लिए मैंने तो ऑल दो तीनों पढ़ी हुई हैं, बट आई विल से कि आइदर यू शुड गो फॉर तमिलनाडु और यू कैन गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशियंट जो RS अग्रवाल की है, एंड सतीश चंद्र। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इस फिल्म्स में जो लाइक आई वाज गेटिंग 120+। तो उसका एक रीजन ये भी था कि जितने भी मिडिवल के क्वेश्चंस आए थे वो सब सही हो गए थे बिकॉज मैंने बुक पढ़ी हुई थी। जबकि दिस टाइम आई कुड नॉट रिवाइज बिकॉज इंटरव्यू लास्ट में था एंड रिजल्ट बस 3 दिन पहले आया था। स्टिल मैंने सिंस 2022 अटेम्प्ट में पढ़ी थी तो उसका फायदा मुझे हुआ था। सो जस्ट टू सो आई एम एम्फेसाइजिंग इट कि ये वाली बुक पढ़ लेना सतीश चंद्र फॉर मिडिवल, बिकॉज नाउ दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द मिडिवल पार्ट एज वेल, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर की एक जो बेसिक बुक है नितिन सिंघानिया, वो आप पढ़ लेना। उसमें सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक बाय हैविंग अ लुक एट द PYQ यू विल गेट अ हैंड कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। उसके अलावा क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसको भी उसी पर्सपेक्टिव से देखना है एनसीईआरटी को कि डायग्राम पे फोकस कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हो उस पर फोकस कर लेना, एंड दैट विल इंश्योर कि आपका आर्ट एंड कल्चर में जितना हो सकता है, ऑल्दो क्वेश्चंस इसमें टफ भी आते हैं बट अगर बाकी लोग जिनके हो रहे हैं तो आपके छूटेंगे नहीं। दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर। देन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मुझे मनाल सर के नोट्स अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने वो किए थे, आप लेक्चर या नोट्स कुछ भी देख लेना। क्योंकि इकोनॉमी इज लाइक आपके जो है वो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आएंगे, 20-25 क्वेश्चन, एंड इकोनॉमी में हिट रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, लाइक 90% ऑफ दोस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इफ यू वांट टू गेट अ स्कोर ऑफ लाइक 110, 120। तभी आपका वो स्कोर पहुंचेगा, क्योंकि बाकी चीजें थोड़ी सी वैसी होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, बट इकोनॉमी इज अलॉट इजियर। सो उसमें आपका हिट रेशियो बहुत हाई होना चाहिए। देन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो आपका कॉन्सेप्ट होता है एंड देन आपके मैपिंग वाले पार्ट हो गए। सो कॉन्सेप्ट वाले के लिए मैंने जो उस टाइम पे किया था लाइक इन 2019-20 जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने यूट्यूब पे राजतनिल मैम के वीडियोज है, मनाल सर के चैनल पे थे, वो मैंने देखे थे। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट आ गया है, यू कैन रेफर टू देम एज वेल। कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई होने चाहिए। 11th 12th की एनसीईआरटी आप देख सकते हो। एंड देन मैपिंग। सो मैपिंग वाले में बेसिकली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई 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 बिलीव कि जो लोग फिल्म्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं उनकी मैपिंग पे इतनी कमांड होती नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है कि ये वाली मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये बुक थोड़ी सी हैवी है। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है इस बुक से, लेकिन इंपॉर्टेंट थीम्स आप आइडेंटिफाई कर लेना जो कि PYQ में आपको दिखेंगे। सो यू कैन फोकस ऑन द रिवर्स, माउंटेन पीक्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, लेक्स, ग्लेशियर, डैम्स, जो UPSC पूछ चुका है वो उससे एक बार आइडिया ले लेना, उसके खुद के नोट्स बना लेना।
मैं वो भी शेयर कर दूंगा। मैंने गूगल शीट बनाई थी और मैप पे भी थोड़े से खुद से मैंने काफी कुछ मैपिंग की हुई है, तो वो आई विल शेयर दैट ऑन टेलीग्राम। उसके अलावा या सो उसके अलावा आई आई सॉ वन डाउट इन द टेलीग्राम चैनल कि कोई पूछ रहा था कि प्लेसेस इन न्यूज वाले कैसे करना है। सो प्लेसेस इन न्यूज वाले का एक तो मैंने बताया कि उसका एक एक तरीका तो वो होता है, ऑब्वियसली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यू हैव एन आइडिया कि कहाँ पे दुनिया भर में क्या चल रहा है, तो उससे यू कैन एलिमिनेट एंड रीच द फाइनल आंसर। बाकी ये भी होता है कि जब प्रीलिम्स पास आने वाला होता है ना, उस समय ऐसा होता है कि काफी जो यूट्यूब में काफी यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो अच्छी मैपिंग करवाते हैं। तो आई यूज टू जस्ट वॉच दोस वीडियोस व्हाइल हैविंग माय लंच या डिनर करते समय जो है वो मैं वो वीडियोस देखता था। वो ज्यादा बड़े होते भी नहीं है, आप 15 मिनट्स के होते हैं, आप लंच उतने में कर लोगे एंड देन यू कैन आपका एक एक क्वेश्चन उससे हो सकता है सही भी हो जाए। तो इस तरीके से यू कैन डू मैपिंग पार्ट एज वेल। तो ये ज्योग्राफी का हो गया। या आई सॉ वन समवन सेड कि जीसी लियोंग वाला पूछा उन्होंने। यार मैंने एक्चुअली जो है ना वो जीसी लियोंग अलग से पढ़ी नहीं है ऑनेस्टली। तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी जोश जोश में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं। मैंने वो किया था एक्चुअली पीएमएफ मेंस के लिए बेसिकली। या आई विल या अक्षत आई विल शेयर द नेम्स लेटर एंड ऑन टेलीग्राम चैनल आई विल शेयर। सो उस समय मैंने बेसिकली क्या किया था कि तब पढ़ी थी, बट बाद में लाइक फॉर मेंस व्हाट आई डिड वाज बेसिकली आई रेफर टू पीएमएफ आईएएस के नोट्स थे। वो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे बिकॉज आई आई फाउंड द कंटेंट गुड, सो मैंने उससे पढ़ लिया था। सो प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक कि जीसी लोगों की उतनी नीड है, बिकॉज इफ यू सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन प्रीलिम्स फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन, यू विल फाइंड कि कॉन्सेप्ट बेस्ड तो एक ही दो क्वेश्चन होते हैं। दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द मैपिंग पार्ट। So mapping ज़्यादा important है for prelims, not the conceptual part. You should not miss out on that because mains में conceptual आता है थोड़ा, but still prelims के लिए I don't think GC लोगों की इतनी need है। देन एनवायरनमेंट। सो इसके लिए तो ऑल टाइम फेमस एक बुक है वही शंकर आईएएस की, सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लेना। स्टार्टिंग में यू माइट नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग क्योंकि काफी कुछ डेटा कंटेंट होता है। सो बेसिकली बाद में जो है वो आप इस लेकिन इसको पढ़ लेना। इसके अलावा भी ऑन एनवायरनमेंट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, सो आई विल टेल लेटर कि उसके लिए क्या क्या करना होता है। एस एन टी। सो एस एन टी में बेसिकली करंट अफेयर्स इज द मेन थिंग ऑब्वियसली। लेकिन जो मैंने अभी पैटर्न देखा है ना वो बेसिकली ऐसा है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बायो पार्ट एज वेल एंड फॉर पीपल हु हम मैक्सिमम पीपल बायो जो है वो 10th के बाद नहीं पढ़ते हैं। सो बेसिकली दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। जैसे 2021 में आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि 5 क्वेश्चन बायो से आ गए थे। तो मतलब वो एकदम 5 में ऑलमोस्ट जीरो गया था। तो वो वैसा आप मिस आउट ना करो, बिकॉज आपको रफ आइडिया भी होता है ना, तो यू आर एबल टू गेट दोस क्वेश्चंस राइट एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये स्टडी आईक्यू में मैंने जो है वो एक रंजीता मैम है, शी इज अ डॉक्टर, सो उनके लेक्चर्स बायो के लेक्चर्स मैंने एनसीईआरटी उन्होंने एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ाई हुई है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने 2 बार देखे थे, लाइक फर्स्ट टाइम उनके उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो मैंने देख लिया था, एंड देन उनकी स्लाइड्स जो है वो उनके चैनल पे पड़ी होती है तो मैंने वो स्लाइड्स से पढ़ लिया था। तो उससे बेसिकली आपका जो एक ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो बायो वाला है, वो उससे अगर 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं तो वो आप हिट कर दोगे। ऐसे ही आपके नंबर बढ़ते हैं प्रीलिम्स में बेसिकली। जो बाकी छोड़ रहे हैं वो आप वो भी जो है वो देख पढ़ के जा रहे हो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बताऊंगा, बट साइंस में ये एक ब्लाइंड स्पॉट था जो मैंने आपको बताया। नाउ करंट अफेयर्स। सो मैं ये बोलूंगा कि 2 कोचिंग का देख लो। एक जो सबसे पॉपुलर कोचिंग जो आपको लगती है उसका पढ़ लो, और एक बस ऐसा बैकअप के लिए किसी का पढ़ लो। और अगर आपने एक कोचिंग का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सेकंड कोचिंग का पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि डोंट जस्ट लिमिट इट टू एक 1 ईयर, लाइक यू शुड गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज दिस टाइम लाइक व्हेन आई वाज गिविंग प्रीलिम्स, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था, सो आई रियलाइज कि काफी क्वेश्चंस तो ऐसे थे, जो काफी करंट अफेयर्स ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़े थे। जब मैं 2020 का मैंने अटेम्प्ट दिया था उस साल मैंने वो पढ़ के गया था, वो अब जाके यूपीएससी ने पूछा है। अब ऑब्वियसली आप उतना पीछे जाके नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो है वो कंपटीशन में रहो, कंपटीशन में रेलिवेंट रहो, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ सिलेक्शन की। उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो 2 साल का पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपने अगर 1 साल का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिलीव मी 2 साल का पढ़ने में जो आप 1 साल पीछे जाओगे ना तो काफी चीजें रिपीटेटिव होती हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी उसको। लेकिन वो 1 साल का पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो सेकंड जो आप 1 साल बैक वाला होगा
तभी वो आपको आसान लगेगा। वरना आप जो क्या करोगे कि आपने एक रीडिंग की फर्स्ट फर्स्ट इस साल वाले की, देन आप चले गए उसमें, आपको ये वाला तो याद नहीं था, लगा कि अच्छा वो भी याद करना है, एंड देन यू विल एंड अप फेलिंग मिजरेबली। तो पहला ये होना चाहिए कि बेस, कोई भी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि हाई मार्क्स कैसे लाने हैं, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, देन फोकस ऑन ऑन दोस थिंग्स। ठीक है। तो ये गलती मत करना कि सब कुछ जो मैंने बताया सब बस कवर करने के लिए यू आर रीडिंग, बट आपका जो है वो बेस रेडी नहीं है। तो फर्स्ट फोकस ऑन बेस एंड देन एक्सपैंड। सो दिस वाज फॉर द करंट अफेयर्स। देन देन टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली मैं आपको ये जो मैंने कोर्स बनाया है, ये मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रीलिम्स इज डाइसी। सो आपका टारगेट होना चाहिए बेसिकली 10,000 क्वेश्चंस के लिए, जो कि इस फॉर्म में भी हो सकता है कि 100 टेस्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो रोज डेली जो है वो आप 20-30 MCQ सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो है वो 6 महीने या 6.5 महीने बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, एंड देन आप जो है वो उस पे तब तक जो है वो आपके हो जाएंगे। तो दोनों मेथड फॉलो हो सकते हैं। वॉट आई एम सेइंग कि व्हेन यू सॉल्व सो मेनी एमसीक्यूज ना, जैसे आई वाज टेकिंग दिस सेशन, जब मैंने पहला सेशन लिया था, पीपल वर सेइंग कि उनको जो है वो जीएस का पेपर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। वो इशू होता है, वो मेरे साथ भी होता था। दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू रिलेट टू दैट क्वेश्चन, कि आपको 2 घंटे में वो, बिकॉज आप सोचने में इतना टाइम लगा दे रहे हो कि इसका ऑप्शन क्या हो, इसका आंसर क्या होगा, मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। तो वो सब चीजें तभी दूर होती है व्हेन यू हैव प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा इंटेंस आपने प्रैक्टिस की होती है ना, कि आपका नेचुरल वो निकल के आता है, कि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हो जाती है कि ये इसका आंसर तो यही होगा, या नहीं भी होगा तो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं अगर 10 क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन अगर जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बेसिकली उसमें 7 से हो जाएंगे, 3 गलत होंगे, तो नेट में जो है वो मेरा कुछ बनेगा जाके 6 क्वेश्चन, विच इज 12 आउट ऑफ 20। सो अगर मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो इट इज लाइक 120 आउट ऑफ 200। वो गेम आपको समझ में आने लगता है। तो जो आप जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे होते हो ना पहले, जब आपने एमसीक्यू नहीं सॉल्व किए होते हैं, कि सोचने में, वो सोचने वाला टाइम आपका चला जाता है, एंड देन यू एक्ट, आप बहुत फ्लुएंटली सॉल्व करते हो चीजों को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कब से सॉल्व करने चाहिए टेस्ट क्वेश्चन। जितनी जल्दी हो उतना बेटर है। ऑल्दो मैंने तो ऐसा किया था, क्योंकि मैंने जब लाइक 21 में मैं फेल हुआ था, 2022 में जब अच्छा किया था, तो मैंने उसमें जैन के एंड से मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो वो वाला कर सकते हो, जैन जैन के एंड से मैंने किए थे, लेकिन फिर रेगुलर था वो। आप ये कर सकते हो कि लाइक आपका अगर एक आइटरेशन हो गया है या 2 आइटरेशन हो गए, तो यू कैन सॉल्व लाइक 10-15 क्वेश्चंस डेली कर लो। जब जब जैन का महीना, जब जैन आए या फिर जब फेब आए, तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। So test series basically, see, 10,000 question is equivalent to 10,000 क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 100 टेस्ट। वो कोई एक टेस्ट सीरीज तो होती नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसका मतलब है कि मैंने 4-5 सॉल्व की थी। तो कोई भी उठा लो, मोस्ट फेमस फेमस उठाओ, सबको नाम पता होंगे यहाँ पे, तो आप वो उठा लो मोस्ट फेमस वाली। बाकी ऑल इंडिया टेस्ट भी देना, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू गेज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो 4-5 टेस्ट सीरीज उठाना, उससे बेसिकली यू गेट अ हैंग कि अलग अलग टेस्ट सीरीज में ऑल्सो यू आर एबल टू परफॉर्म, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ क्वेश्चंस आर मेड। तो उससे जो है ना बेसिकली आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल काफी डेवलप होती है। एंड बिलीव मी, जितने भी मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम, जब उनके 120 के प्लस ऊपर आए हैं, तब जो है वो बेसिकली दे हैव सॉल्व्ड अराउंड 8,000 क्वेश्चन, 9,000 क्वेश्चंस, या उससे वो ज्यादा उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, तभी उनके आते हैं। आप यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल जिन्होंने कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट स्टिल दे वर एबल टू गेट गुड स्कोर, बट ऐसे लोग कम होंगे। So basically जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सिलेक्शन की, योर फोकस शुड बी ऑन दैट। Someone asked question regarding answer writing. See, this is about prelims. I think वो सब मैं अभी, वो मैं आपको एक सेशन में मिनट्स का भी लूंगा कि prelims और मिनट्स को कैसे इंटीग्रेट करना होता है। आई थिंक आई कैन हेल्प देयर एज वेल। तो उसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। दिस इज अबाउट prelims, तो कीप लिमिटेड टू दैट ओनली। सो दिस वाज अबाउट टेस्ट सीरीज। नाउ PYQs, ऑब्वियसली। सो PYQs लाइक, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी वजह से जो है वो कोई भी 120 प्लस मार्क्स लेके आता है एक्चुअल एग्जाम में। तो उसमें जो है वो मैंने दिशा पब्लिकेशन, वो मृणाल सर की है, वो बेसिकली 1995 के आगे का जो है वो उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस। सो यू कैन गो फॉर दैट, और जो भी आपको सही लगे आप वो देख लेना। मैंने ये यूज की थी।
उसके बाद बेसिकली व्हाट यू नीड टू सी इज कि आप उसमें जो है ना वो उन्होंने सब्जेक्ट वाइज बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, तो इट हेल्प्स यू इन फाइंडिंग आउट द पैटर्न विच इज इमर्जिंग। तो एनवायरनमेंट में जैसे यू विल सी कि एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली होंगे नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व रामसर साइट पे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली होंगे कुछ जनरल एनवायरनमेंट के उस पर के ऊपर की, लाइक बायो रिमीडिएशन हो गया, या फिर बायो एक्यूमुलेशन, ऑल दोस थिंग्स जो जो आपको शंकराचार्य में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं कि कोई अलायंस लॉन्च हुआ है एंड देन विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इंडिया पार्ट है कि नहीं है, ये कंट्री पार्ट है कि नहीं है, उस टाइप के होंगे। सो दिस थीम्स मैं भी कोशिश करूंगा आपको बताने की, बट जितना आप खुद से देखोगे ना उतना आपके लिए भी अच्छा होगा कि किस किस टाइप के थीम्स जो है वो बेसिकली यूपीएससी पूछता है। तो उसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थीम्स आइडेंटिफाई करने के लिए आई विल से कि 2013 के बाद से देखना, बिकॉज वहां से पैटर्न चेंज हुआ है। आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जस्ट इसलिए कि अगर वो रिपीट होते हैं तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ गोइंग बैक एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन। ये आप देखोगे काफी, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे उसने रिपीट किया है। बट पैटर्न पकड़ने के लिए आप 2013 के बाद से पेपर उठाना, एंड उसमें आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है। मैं आपको आइडिया दूंगा, बट मैं आपको आइडिया ही देना चाहता हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू टू फाइंड योर ओन पैटर्न, अपने आप से भी आप पैटर्न ढूंढो, समझो, तब जो है वो आप ज्यादा अपना ब्रेन को एक्टिवली यूज कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड ग्रास्प। जो मैं चाहता हूँ इस कोर्स से डिलीवर करना, यू विल बी एबल टू गेट दैट। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस ये होती है। हाँ, अब ये वो चीजें हैं कि जिससे आप अपने मार्क्स बढ़ाते हो। जैसे कोई बंदा 90 पे है या 95 पे है, उससे वो 110 115 के पे कैसे जाता है। तो उसके लिए कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। जैसे पहला होता है कि नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, जीआई टैग। जैसे 2020 में जो आप अगर देखोगे ना, तो उस साल एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन जो है वो नेशनल पार्क से आए थे, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से। एंड मैं वो पहले से ही पढ़ के गया था, मेरे साथ के साथ तो सही थे, इस वजह से वो निकला भी था। तो वो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, वो अच्छे नोट्स थे, ठीक ठाक नोट्स थे, किसी कोचिंग के थे, मैंने उसमें खुद से बाद में पढ़ा था। तो वो मैं नोट्स आई विल शेयर। देन उसके बाद होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो किसी भी एक कोचिंग जो है वो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स कंपाइल करके दे, काफी है ऐसे मार्केट में जो आपको कंपाइल करके दे देंगी। यू कैन गो फॉर दैट, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि गवर्नमेंट किस तरीके से सोचती है। तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में जो है ना, दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टेटमेंट आपको हटानी हो या आपको जज करना हो कि गवर्नमेंट की लैंग्वेज ऐसी होती है कि नहीं होती है, वो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के थोड़ा आइडिया लगता है। देन पीआईबी का ईयरली कंपाइलेशन आता है। उससे बेसिकली क्या होगा कि आपको पता चलता है कि व्हाट डेवलपमेंट्स आर बीइंग डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल। तो वो अगर आप पढ़ पाओ, लाइक सब मिनिस्ट्रीज का मत पढ़ना, वो 40 हो जाती हैं ऑलमोस्ट, वो ज्यादा हो जाता है। बट यू शुड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, देन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, वाटर हो गया। ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज है ना, यू शुड फोकस ऑन दैट। उससे आपको जो है वो उससे ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, उस पर डेटा पे मत जाना कि इतना हुआ इतना हुआ, वो याद भी नहीं रख पाओगे, बट जस्ट टू गेट अ हैंड कि कितना डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे जो है वो ऑप्शन बनेंगे, एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट देम एज वेल। तो वो ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। हाँ, अब ये मैंने जो है वो बेसिकली सिलेबस वाला पार्ट बता दिया ना। अब किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वरना मैं अब आता हूँ उस पे, बेसिकली क्वेश्चंस पे आता हूँ, उस पे आऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू पे गेस वर्क या टेक्निक्स अप्लाई होती है। कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हो आप इस। ओके, सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो गेस वर्क पे आते हैं अब हम लोग। हाँ, दीपक आती है, उसके उसके बाहर की भी जो है वो आएगी, और उसके बाहर की ही आती है, बेसिकली मोस्टली ऐसा ही होता है। तो उसमें जो है वो कैसे हम लोग आंसर पे पहुंचते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा। बट हाँ, वो मैं बताने वाला हूँ। सो सो अब गेस वर्क वाला हम लोग देखते हैं कि कैसे टेक्निक्स एंड ट्रिक्स पे अप्लाई होती हैं। तो बेसिकली उसके पहले जो है वो जिसने वो सेशन देखा होगा, या टिप्स टू मेक नोट्स, बहुत वाइड क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वी कैन टेक लेटर सेशन में। अ, तो बेसिकली जो गेस वर्क वाला पार्ट होता है उसमें आपको ये सोचना है कि जो सिलेक्शन आपको
दिलवाएगा। लाइक लेट्स से आपको जो है वो अगर 100 मार्क्स लेके आने, 110 मार्क्स लेके आने हैं, उससे ऊपर लेके आने, सो बेस दैट वो तभी आता है जब आप ऑलमोस्ट, या तो नेट में 50, आपके नेट में 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए, या नेट में 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए। अब अगर मान लो आपने जो है वो 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हुए हैं, उसमें से आपके 15 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, तो आप जो है वो आप लिस्ट के बाहर हो जाओगे या मार्जिन से निकालोगे। तो इसलिए जो है वो बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने होते हैं, क्वेश्चंस को जो है वो ज्यादा अटेम्प्ट करना होता है, लेट्स से 80, 85, 90 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और वो इस एस्पेक्ट में होते हैं कि 40 क्वेश्चंस तो देखो हमको आते होंगे, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है तो 40 या 35 क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे। लेकिन वो 35 से 95 या 35 से 85 लेके जाने की जो स्किल है, वो इस इन सब चीजों से आती है, जो आपका नॉलेज बेस या आपका गेस वर्क कैसे काम करता है। उसमें आपको ये देखना होता है कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए रफली 60%। तो अगर लेट्स से आपने 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके 30 सही होते हैं, 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है, तो आपके लगभग बनेंगे जाके कुछ 58 के आसपास बन गए। लेकिन अभी आपको 100 के ऊपर पहुंचाना है या 110 के ऊपर पहुंचाना है। तो बचे हुए जो 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें जो है वो बेसिकली 60% अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो दैट इज रफली इक्वल टू 30 क्वेश्चन सही और 20 क्वेश्चन रॉन्ग, विच विल मेक इट 60 एंड हाँ, विच विल अगेन मेक इट लाइक 40 या 45 नंबर आपको दिलवा देगी। तो दैट विल एंश्योर कि आप 110 के ऊपर चले जाओ। तो ये लॉजिक जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग को गेस वर्क जो है वो लगाना पड़ता है। तो इसमें जब मैं बताऊंगा, तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि ये टेक्निक्स जो मैं बताने वाला हूँ, ये 100% केसेस में नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो मेरे पास कल क्वेश्चन लेके आ जाओ, कह दो कि आपने ये बोला था, इसमें तो लगनी चाहिए थी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो सब में नहीं लगेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ वो 70% से, या 70% या 70% से ज्यादा क्वेश्चन में सही हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। तो पहला जो गेस वर्क, पहली जो टेक्निक है वो ऐसा है कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना दी गई हो, कि स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे वो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कि बहुत स्पेसिफिक अगर कोई स्टेटमेंट है, तो वो जनरली गलत होती है। उसका रीजन ये होता है कि आप एग्जाम में जो पेपर बना रहे हो उसकी मेंटेलिटी को समझो, कि उसको गलत स्टेटमेंट बनानी है। यूपीएससी में गलत गलत स्टेटमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज यूपीएससी का इन एनी पेपर गलत गलत चीजें बनाना इज अ टफ थिंग, क्योंकि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होनी चाहिए, 100% केसेस में वो रॉन्ग होनी चाहिए। और उसको गलत तभी कर सकता है जब वो उसको मतलब नैरो करता जाए। अगर उसने थोड़ा सा भी वाइड बना दी ना स्टेटमेंट, और वो एक एक सिचुएशन में भी सही हो गई, तो बेसिकली लोग जो है वो हंगामा मचा देंगे कि आपकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी वजह से जो है वो तुक्के से लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उसको जो है वो स्टेटमेंट हर एक केस में गलत बनानी है, एंड दैट इज वाई वो नैरो स्टेटमेंट बनाएगा। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तब आपको यही चीजें पूछनी है कि जो क्वेश्चन जिसने बनाया है, वो स्टेटमेंट ऐसी जो मैं गलत मान रहा हूँ वो सही में ऐसी है कि वो 100% केसेस में गलत हो सकती है कि नहीं। अगर उसका आंसर आपको हाँ मिलता है, तो यू कैन कंसिडर दैट स्टेटमेंट एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये लॉजिक मैंने आपको दिया। अब मैं बताता हूँ कि आगे स्पेसिफिक कैसे बनाती है यूपीएससी। जैसे डेटा या फैक्ट्स जब दिए होते हैं, तो डेटा फैक्ट्स बेसिकली ऐसा होता है कि उसको गलत करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली ऐसा होता है, जनरली हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, जनरली ऐसा होता है लाइक 70-80% ऑफ द टाइम स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो डेटा या फैक्ट होगा वो गलत होता है। तो जैसे पहला वाला देखते हैं कि 21st Feb is declared as to be the international mother language day by the UNICEF। अब ये सब भाई इतना किसी को पता नहीं होता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला कि डेटा फैक्ट्स जनरली गलत होते हैं, तो इसलिए मैंने इस समय उसको गलत मान लिया था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली उस समय जब पाकिस्तान बना था, तो उसके पास जो है वो बांग्लादेश भी था, वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे वो ऑब्वियसली वो बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहां पे डिमांड उठी होगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही लग रही है। पहले वाले में जो है वो बहुत स्पेसिफिक कर दिया उसने कि 21st Feb को जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो ये डेटा है, तो मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता है कि ये होता है तब तो मैं सही मानूंगा, मुझे नहीं पता तो मैं जो है वो भाई इसमें रिस्क लेने वाला हूँ, बिकॉज देर इज अ 70-80% प्रोबेबिलिटी कि ये गलत हो। तो मैं इसको गलत मानूंगा। पहला गलत, सेकंड सही, आंसर जो है वो इसका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जो है वो 2021 का है। इसमें भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो उसको ये पता होगा. Okay. So whoever has read this, whoever has read लक्ष्मीकांत, उसको थोड़ा सा आइडिया होगा बेसिकली कि आर्टिकल 18(1) में ऐसा होता है कि टाइटल्स जो है वो ये नहीं होते हैं. टाइटल्स जो है वो मिलिट्री होते हैं, एकेडमिक वाले होते हैं. तो उसको ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट पे जब हम लोग आएंगे तो वी विल सी कि पद्मा अवार्ड्स which were instituted in the year 1954 were suspended only once. तो ओनली वंस, जैसे ओनली स्टेटमेंट इसने लगा दी, तो यूपीएससी में मोस्टली ऐसा होता है कि जब ओनली चीजें लगाते हैं ना तो दे आर जनरली रॉन्ग, गलत होती है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा उसने स्पेसिफिक बना दी है. एंड ऑल्सो जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया उसको ये पता है कि वो एक से ज्यादा बार जो है वो बंद किए गए थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर. सो दैट इज वन थिंग. थर्ड इज कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर. अब इसमें भी जो है वो उसने बेसिकली इट हैज गिवन अ फिक्स नंबर 5 जो है वो उसने बेसिकली दिया हुआ है कि पांच को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है. दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. तो इस वजह से भी जो है वो बेसिकली हम इसको रॉन्ग कर देंगे. और वैसे भी नॉर्मली ऑल्सो वी नो दैट भारत रत्न अवार्ड इज गिवन टू मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल. तो जिसको नहीं पता है दैट पर्सन कैन ऑल्सो से कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इसमें डेटा दिए गए हैं. तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है. आंसर विल बी डी पार्ट. This is again 2021. Consider the following statement in respect of 32nd Summer Olympics. Official motto for this Olympic is a new world. Again, this is like a theme, a motto. Whenever UPSC gives you a theme of something or motto of something, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखें, ऐसे स्टेटमेंट देखें यूपीएससी में, दे आर जनरली रॉन्ग. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. आई एक्सपेक्ट यू टू गो एंड लुक एट द पीवाईक्यूज. आप सिमिलर चीजें जो है ना वो पीवाईक्यूज में फाइंड करना. आई एम नॉट गिविंग यू एवरी एग्जांपल फ्रॉम दिस फ्रॉम द टेक्निक्स व्हिच आई एम टेलिंग, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि यू विल स्टॉप यूजिंग योर ओन ब्रेन और खुद का दिमाग आप लगाना बंद कर देते हो. उससे नॉट, उससे ये होता है कि आप जो है वो फिर स्पून फीडिंग वाला हो जाता है. तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस कोर्स. तो उस वजह से जैसे ये पहला जो है वो फैक्ट है. एंड फैक्ट मैंने बोला कि यूपीएससी में मोस्टली रॉन्ग होता है, तो पहला स्टेटमेंट मैं इसलिए इस वजह से जो है वो गलत मानूंगा. सेकेंड, इफ आई सी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स. तो इसमें थोड़ा बहुत जो है जिसने भी हल्का फुल्का ओलंपिक देखा होगा उसको आइडिया होगा कि हाँ ठीक है यार, ये इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है. इतना वाइड गेम ले लिया कि क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, इतने सारे गेम ले लिए, तो कोई ना कोई अगर एक भी हो गया तो भी जो है वो ये स्टेटमेंट गलत बनाना मुश्किल है. सो दैट इज वाई स्टेटमेंट टू विल बी, स्टेटमेंट टू इज राइट एंड स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग. एंड आंसर विल बी बी. अगेन दिस इज द, कोई पूछ रहा था ना कि हाउ टू गेट दोज क्वेश्चंस राइट जो शंकर में नहीं होते हैं. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. So here they are given कि first statement is the Global Ocean Commission grants license for seabed exploration and mining in international waters. Second is India has received license for seabed mineral exploration in international water. जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. थर्ड इज कि rare earth minerals are present on sea floors in international waters. ऑब्वियसली ये तो स्टेटमेंट सही होगी होगी, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. सो सेकंड एंड थर्ड तो सही है. पहला वाला उसने बोला कि ग्लोबल ओशन कमीशन. पहली बात तो ये है कि ये चीज पता होना चाहिए कि इसका काम नहीं होता, वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है, आईएसए, जो लाइसेंस देती है. बट जिसको नहीं पता है उसके बाद भी जो है वो अगर वो बस ये लगा ले कि फैक्ट एंड डेटा जो है वो गलत होता है, देन ऑल्सो दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड रॉन्ग. एंड इफ यू विल एलिमिनेट वन, आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड. तो इस तरीके से जनरली जो होता है वो स्टेट ऐसे फैक्ट्स गलत होते हैं. ये आप अगर अप्लाई करोगे तो 70% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन आपके सही होने, कुछ आपके गलत भी जाएंगे. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये 2017 का क्वेश्चन है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन सीसीएसी टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट pollutants इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज. सो वी नो कि G20 वाला ये वैसे तो ये खुद ही जो है वो एक ये फैक्ट है, वैसे भी आप गलत कर सकते हो. बट इफ यू यूज कॉमन सेंस तो यू विल सी कि G20 का काम ये नहीं होता है बेसिकली कि जो है वो पॉल्यूटेंट्स एंड शॉर्ट, अभी जैसे वी कंडक्टेड G20 उसमें कोई ऐसी बात हुई थी कि पॉल्यूटेंट्स को जो है वो हम देखेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी. तो उस बेसिस पे ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. एंड सेकेंड इज कि CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. अब जैसे
अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, उसके लिए वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि सीसी फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज रिटन दैट सीसीएसी इज टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, एंड वी नो कि मीथेन एंड ब्लैक कार्बन आर शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट, वी कैन करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट बाय टेकिंग क्लू फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज फैक्ट एंड ऑल्सो आई सेड कि G20 में ऐसी ऐसी चीजें तो नहीं हुई थी, तो उससे हट गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया बिकॉज पहले से हमको क्लू मिल रहा है कि वो सही होना चाहिए, इसलिए जो है वो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सो ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फैक्ट्स एंड डेटा। सो आई एडवाइस कि मैंने जो अभी आपको आइडियाज दिए, व्हाटएवर एग्जांपल्स आई हैव गिवन, you can go back you can go back to PYQs and you can find more such examples and you will find कि 70-80% of the times or more than that वो चीजें अप्लाई होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, अब जैसे कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं टू मेक द स्टेटमेंट अ लॉट मोर स्पेसिफिक। अगेन द रीजन इज सेम, दे वांट टू मेक इट वेरी नैरो सो दैट इट इज रॉन्ग इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज। ओके, सो जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स आर यूज्ड। so this is a 2021 question with reference to palm oil. Consider the following statement: palm oil tree is native to Southeast Asia. Second is palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. Third is palm oil can be used to produce biodiesel. First को छोड़ते हैं, second third पढ़ते हैं। First, second is कि palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. So obviously we know कि palm oil has usage in multiple industries, बहुत ही significant raw material होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक रॉन्ग, क्योंकि अगर कहीं किसी एक लिपस्टिक में भी बन गया, किसी एक परफ्यूम में भी पाम ऑयल यूज हुआ, सो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू, दिस स्टेटमेंट विल स्टैंड करेक्टेड एंड फिर जो है वो पंगा हो जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। थर्ड इज की पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। ऑब्वियसली हो ही सकता होगा, आजकल तो टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट अ रैपिड पेस, सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन जो पहले नहीं लगती थी, आगे आगे भी अगर हो सकती है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। फर्स्ट वाले में इशू है कि पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे मैंने बोला, में ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं ना, आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीजें जो है ना वो गलत होंगी। जितना ज्यादा वो किसी को स्पेसिफिक बना देगा, पर्टिकुलरली लिमिट कर देगा इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, इन एनी पर्टिकुलर केस, the chances of that statement being wrong is very high. So if you just eliminate option 1, you will get an answer, the answer is B part। ऐसे ही 2021 में दूसरा क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली द क्वेश्चन इज कि मोरिंगा इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। सेकंड इज कि टेलमेंट ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। थर्ड इज इन इंडिया, in India most of the tamarind is collected as a minor forest produce. Fourth is India exports tamarind and seeds of moringa. Fifth is seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels. तो पहले तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स which are difficult to make wrong, या तो which are difficult to make wrong. Okay, so we can we so if we look at the fifth statement, that seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuel. Again I said ki this is a very general statement, obviously they can be used. So statement 5 can be considered as a right statement. So from that perspective option C is a wrong. Option C will not be the answer. फोर्थ इज इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। ऑब्वियसली टैमरिंड इमली जो है वो इंडिया में पाई जाती है, वी कैन इट माइट बी एक्सपोर्टेड, एक एक्सपोर्टर भी है तो एक्सपोर्ट की जाती होगी ना, सो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 4 भी जो है वो सही हो जाएगा। नाउ 4 and 5 is correct. Okay, so answer will be A or B. So we need to see कि अब इसमें either statement 1 or 2 will be right, or statement will be right, or statement third will be right. So if we look at second statement, if अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, स्टेटमेंट थर्ड को अगर हम लोग पढ़ते हैं, वी कैन सी कि मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज MFP। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है गलत होने की कंपेयर टू सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज लिमिटिंग इट टू अ पर्टिकुलर सिनेरियो की जो है वो एंडेमिक टू साउथ एशिया बहुत ही नैरो कर दिया है। भाई टैमरिंड है, थोड़ा जो है वो पाकिस्तान या कहीं बांग्लादेश या कहीं और पे भी जो है वो वी कैन इंश्योर कि टैमरिंड के पेड़ जो है वो लगे होंगे कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जो है वो दिस स्टेटमेंट
ये एंडमिक होने के लिए जो है ना वो गलत होने के लिए, लाइक दिस स्टेटमेंट बीइंग रॉन्ग हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू स्टेटमेंट थर्ड. So from that perspective, we can arrive at option B. That option B will be the answer and not option A, because option A has option 2. Option A में जो है वो statement 2 है, which is much more narrow, and उसके सही होने की कम probability है, गलत होने की ज़्यादा probability. So in this way, we can arrive at the answer. So this is 2017 question. Which of the following are the objectives of National Nutrition Mission? So options are to create awareness relating to malnutrition among pregnant women and lactating mothers. This statement लगती तो सही है, होनी चाहिए. Statement 2 is to reduce incidence of anemia among young children, adolescent girls and women. So obviously it is about nutrition and other things. So focus will be on the vulnerable section like children and adolescent girls. Third is to promote the consumption of millets, coarse cereals, and unpolished rice. Okay, so if you look at this, how much specific statement है ये कि unpolished rice, मतलब आप जो है वो basically लोगों को खाने के लिए हम लोग नहीं दे पाते हैं. We are not able to provide even the basic goods to people, and this they are saying that unpolished rice will be given. इतना specific government scheme कभी बात नहीं करती है. So they have deliberately made this statement a much more narrow statement so that it is easier for them to make this universally wrong. Same is the case with the statement 4, to promote the consumption of poultry eggs. So we are not able to provide eggs to every person, or we will limit it just to poultry eggs. We know how unorganized that sector is in India. So obviously this again they have made this so much specific so that it is easier for them to make this statement wrong. From that perspective, option third and fourth has a higher probability of being wrong, and 1 and 2 have a probability of getting right. तो फिर जो है वो इस वजह से आंसर विल बी ए पार्ट. आगे मैं बढ़ूं इससे पहले आई वांट कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इस पे दे कैन आस्क. ओके, so this is again 2017 question. What is the purpose of Vidyanjali Yojana? So first is to enable the famous foreign educational institution to open their campus in India. Okay, it might be. Second is these things can be clarified later, Shrestha. Second is to increase the quality of education provided in government schools by taking help from private sector and community. Third is to encourage the voluntary monetary contribution from the private individuals and organization so as to improve the infrastructure facilities for the for schools. So if you look at the third statement, इसमें basically जो है वो they have limited the contribution to monetary form of कि आप पैसे लेके आओ, you will give some form of money, only then जो है वो we will consider it as a form of contribution from your side. ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स में कभी लिखा नहीं होता. गवर्नमेंट स्कीम्स नेवर से दैट वी आर लिमिटिंग इट टू जस्ट दिस फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन. इट इज ओपन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन. यू डू इट बाय एनी मेथड. So statement third has been made a lot more specific. Okay, they have limited it to only one form of contribution, which is money form of contribution. So from that perspective, we can make that statement wrong and we can eliminate option third. And when we will eliminate option third, we will see that we are left with option A and option C. So we can see that option 2 is right in both scenario. So we just have to see about first statement, which is that to enable the famous foreign educational institution to open their campus in India. अब इसमें मुझे डाउट इसलिए हुआ because had it been just foreign educational institution, I might have corrected it, but they have added a term की famous foreign educational institution, जिसकी वजह से I was having a certain doubt कि ये this might be wrong because again they have tried to make it a lot more specific. So from that perspective, I will try to there is a higher probability this might go wrong. I'm not saying that whatever I'm saying is 100% correct. This might go wrong, but I'm just saying that this has a higher probability that since they have said that famous foreign educational institution, this might be wrong. And I will eliminate one and I will say that answer is A part. So this is how you arrive at the answer. You need to see whenever you are considering any statement wrong, you just need to ask yourself that is it wrong in all the possible scenarios or not. That
are they making that a statement deliberately a lot more specific just to ensure that they have a high, that they are ensuring that it is wrong in all the possible scenarios or not? So this is how you think. This is how you think in the actual exam. And for this only you have to practice a lot of mock test, so that you are able to use this ideology, this way of thinking in the exam naturally. So it becomes your natural instinct. So that is how, that is what I'm trying to do it. Yeah. So this is now we will talk about the third type of technique. Yeah, Sanjay, that is, I agree with that, and that is why I'll say that I try to apply these things in actual exam only, in like in the PYQs only, not in the test series, because no, because test series, the questions made by test series, by like in the test series are generally made by people who don't have much experience. Generally, I'm not saying it is correct in all the scenario, but this happens and they don't have idea about this. And obviously, like UPSC makes one paper in 1 year, test series makes like 50 papers in 1 year, so obviously their quality is bound to come. So you cannot expect them to follow the same high level as UPSC does. But what you can do, that you can master this master this in the PYQs, and also some of the good test series try to follow this thing. So in their test series also, in many of the questions, this thing can be applied. So yeah, so I agree with you, but I think you can so that is why PYQ becomes important. So and that is why I'm just giving you a glimpse of many of the techniques, which so that you get an idea, and you can apply it, and you can go through the PYQs again and see that on what else question, or what more questions are there on which we can apply these techniques. In this way, you will be able to master those techniques and apply in the actual exam. So this is my objective. This is my goal, to just give you an idea about all the possible techniques and tricks which can be applied to enhance your score, and then you go and try to apply it on your own. So this is what I'm doing here. Yeah. So Aditya, so if you have seen my YouTube video, which was uploaded, so I have given I gave some of the examples from 2020, and from this year prelims as well, and I gave some examples that how I applied those techniques in the actual exam as well, and I will again show that how I will apply all those things, a culmination of all the techniques I'm telling in the actual 2022 and 2023 exam. So it will give you an idea. They will not be applied in 100% of the cases, obviously, but how you can use the PYQs to get to the answers. So you will I will be sharing that. So let's move on to the next technique, which is negative statements. So whenever negative statements are given, like this cannot be done, or this is not the power of this body, or something like this, these statements are generally wrong, because you need to understand from the UPSC perspective that UPSC is a government body, okay, and UPSC is working for government. So it does not want to give an idea, or give any impression that that it is making any body, government body, incapacity, like limiting the powers of anybody. So I will tell you how it applies. So let's say this is a question of 2019. So with reference to the Constitution of India, consider the following statement. First is, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Second is, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. So in this case, you can see that second is obviously, any person and everyone will be having an idea that the second statement is wrong. Okay. Because obviously we see that Supreme Court uses judicial review to cancel, to relook any of the amendment which has been made by the government. So obviously second statement is wrong. First also is wrong, because you can see that no high court shall have the jurisdiction. So it is again limiting the power of the high courts. And I told you that government UPSC is working for the government. It cannot limit the powers of any government body. It will not say that this body does not have the power. Okay. Whenever you come across any such a statement which is limiting, or which is saying that this body does not have the power, and this body cannot do this, that statement is bound to be wrong. And I'm making this a statement in 90% of the cases. Like in 90% of the cases, or more than that, you will find
that this is the scenario. Okay. I could have said 100%, but obviously there is a chance of me committing a mistake there. But in 90% of more cases, you will see that such a statement will be wrong. Whenever any limit has been put on any government body, that statement is bound to be wrong. So from that perspective, you will see that statement 1 is also wrong, and the answer will be D, neither 1 and 2. Similarly, this is a 2022 question. First statement is Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Second is state cannot enter into any contract with the private corporation for sharing of the Aadhaar data. Third is Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Fourth is Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. So if you look at the first statement, it is saying that just a minute. It is saying that Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. So obviously, this is like making UDI as important body, that they cannot do this such things. So from this perspective, like I was what I will do, that from my perspective, I will make the statement 1 wrong, and I will then only 2 options will be left, B and C. Now, if you look at option third, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. So if you have a basic idea, you will be having an idea that the Aadhaar is not mandatory for anything now. Okay, maybe for 1 or 2 things, but generally it is not mandatory for such things. So obviously statement third is wrong. So from that perspective, you can make option B correct. So now many of you will be having a doubt that both first and second statement have a cannot. Okay, so why in one case it is right and why in other it is wrong? So that is where you need to have a rough idea about how UDI and how Aadhaar functions. I know that the first statement is making UDI as much more important body compared to second thing. So that is why I was making statement 1 wrong rather than a statement 2. I didn't say statement 2 is right because I was having doubts about that in the actual exam as well. But statement 1 has a higher chance of getting wrong. So that is why I eliminated option 1 1. And statement third is obviously wrong. Everyone will be having an idea. So that is why that is how we arrive at the final answer, which is option B. This is this is a 2021 question. With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his right. Second is the state government have their own rules, have their own prisoners released on parole rules. So second statement is a general. Obviously, we know that police is a state subject, and they might obviously state government will be having their rules. The second is right. But in the first case, if we look at the first case, we can see that it is again making the making government body important. Like they cannot do anything. They cannot deny in any situation. So that is how this statement you have to make this wrong, because they are limiting or making anybody incapacitated. So that is so because of this reason, first will be wrong, second is right. So option B will be the answer. Yeah, so this is a 2018 question. In India, option one, statement 1 is in India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Again, same tone. You will find same tone, that this body cannot do this thing. This body does not have the power. So again, they are limiting the powers. So from that perspective, also this statement 1 will be wrong. Second is Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mine. So if you look at option 2, okay, let's see option third first. Rajasthan has iron ore mines. So obviously it might have Rajasthan, like if even if there is a single ore of iron, like there is a little bit iron ore present, this statement will be right. It is very difficult to make this statement wrong in all possible scenarios, because if they find even a bit, even 1 gram of iron, this statement will be wrong, and again UPSC credibility will be questioned. So statement, it is very difficult to make a statement third wrong. But if you look at statements second, which is Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. So this is very difficult to make wrong. Like if they have, even if they have even if you find 1 gram of gold from any mine, this statement is bound to be wrong. So obviously this cannot be right. So statement 1 and first and second are wrong because of this. So first and second are wrong. Third is right. Answer will be D.
So this is how you arrive at the answer even when you don't have exact idea of any statement. This is how you eliminate, find out which is the wrong statement, which is the right statement, and you arrive at the final answer. Now look at this 2016 question. So this is with reference to the Gram Nyalay Act. Which of the following statement is correct? First is, as per the Act, Gram Nyalays can hear only civil cases and not criminal cases. So again, same sort of language. This cannot do this thing. So again, you will have to. This should come in your mind now that okay, this statement is bound to be. Second is the act allows local social activists as mediator, reconciliator. This can be correct, like because Gram Nyalay functions in an informal way, so obviously they can include a lot of mediators. We are focusing on the alternate dispute resolution. Government is working on it, so obviously Gram Nyalay will be having some provisions for this thing. Statement two can be right. Statement one, again I'm saying that it is taking some power away from the government body, that this cannot do such things. So from that perspective, again, first will be wrong, second will be right, and option will be B. So anyone having a doubt in this part? If not, we can move on to the next. So yeah, Aadhaar question. So in this first thing is that option third is all statement third is wrong in all scenarios, because that is basic general awareness. So obviously from that perspective, C and D will not be the answer. Option A and B will be answer. And fourth is right. So we have question about first and second. And if you know a little bit about the controversy which was surrounded with Aadhaar, it was said that if we share this data with the private corporation, it can be a big issue. It can be a big issue for the public as well, because cyber security is one of the issue which they might face, and it has biometric data as well. So if you have a rough idea about the controversy, you will not make a statement to right from that perspective as well. So that is why I was saying you need to have a wholesome idea. You cannot just apply techniques and tricks. Okay. So this is the reason why I said that you need to read newspapers as well, so that you have an idea on the controversy and bigger issues in the news. So that is why I made a statement one wrong and statement two right. Yeah, Renuka, you can go back to the YouTube video which I have shared. I have given you I have given a glimpse how these things will apply in that paper as well. And as I already said before that I will be applying these techniques, not all techniques, but some of these techniques in this year paper as well. So you will get an idea that how you can apply these techniques in the actual in a real life situation, how I applied and how you can apply. So you have to wait. Patience is the key. Now, yeah, that can be given later. First, let's focus on the present while you are focusing on what will happen later. So, this is fourth technique, which is overwhelming keywords. Like they will use very strong keywords, like very strong terms like most important, highly, high, consistently, drastically, particularly. Whenever such things are used, there are high chances that such statements are wrong. Okay. So now let's see this question of 2020, which is so they have given first statement by Rajika, which is an renunciant and wanderer. Second is Shamana, based with a high status. Third is Upasaka, lay follower of Buddhism. So like it is very difficult to get this question right just by knowledge, because we don't have this much level of knowledge. We are able to solve this just on the basis of knowledge. But if you look at the second statement, Shamana, and then you will see that priest with a high status. So like this is using high keyword. So and I will show you more examples of this. So whenever such keywords are used, it is in 80% of the cases, it will happen that this will be the wrong statement. So if you eliminate option two, you will get option B as the answer, first and third. So you can solve this even if you have no idea about this question. Yeah. So if they have used all, like if they have said that this thing is correct in all the scenarios, this is true in all the scenarios, then that statement will be wrong, because nothing is absolutely correct. Like it's very difficult to say that this statement will hold by itself in all the scenarios. Like I am telling you a lot of techniques, but I've already given you a disclaimer that this will not apply to all of the questions, because obviously
there is a chance of getting things wrong. So in the same way, you need to think that whatever UPSC is saying cannot be right in all the scenarios. Nothing is true in all the scenarios. Exceptions are always there. So if we go by that, if we read the first statement, in the case of all cereals, pulses, and oilseeds, the procurement of the MSP is unlimited in any state UTO of India. So again, it is very difficult to say that all is the issue here. Okay. Then second is, in the case of cereals, pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which the market price will never rise. Okay. So from that, so what I was saying here, that all they have used all. So this statement will be wrong. Okay. So this I was just giving you an idea of the keywords which are generally wrong. Then this, if they have used the term greatly, so like in this question you will see statement 2. It is that Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sarandi. So whenever they are overemphasizing anything now, like this is very important, most important, greatly, highly, whenever they are adding a lot of keywords to any verb or anything, it will be wrong. So in this case also you can see this statement is a wrong statement. Now let's see this question. This is also one of the keywords which you have to keep in mind. So what is or are the consequences of a country becoming the member of a nuclear suppliers group? So first is, it will have access to the latest and most efficient nuclear technology. So obviously this can be right, because once we become member of the NSG, we might form partnership, or we might share a lot of technologies with each other. So this might be, and this can be right. Second is, it automatically becomes a member of the NPT. Like it is such a smooth process. It's just when you become a member of the NSG, you are a member of the NPT. So it is like like this is such a butter smooth process. And we know that in international level, at the international level, there is nothing such a smooth thing. Okay. So first will be right and second will be wrong. Yeah, so someone asked that in the previous first is wrong. Yeah, that is wrong. I didn't say it is right. It is a wrong statement. So I said that if automatically is used, it will be wrong. Similarly, if immediately type of a word is used, it will be wrong. So in this first statement, if we see, the Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. सही है. Second is, whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. Like, for people who have read Lakshmikant, they will be having idea. But even if you have not read, like this sort of keywords, like overemphasizing, like immediately they will vacate, and we know that immediately seats are not vacated in most of the cases. So from that perspective, we can make this statement wrong. Yeah. So this is again. In this also there is one keyword which is steadily. If you find anything like this is steadily decreasing, steadily increasing, that thing is wrong. So if we I will share the PPT, you can look at this question later. If you read the fourth statement, which is that area under sugarcane cultivation has steadily decreased. So again, there is nothing called steadily increase or decrease. Very few things happen in such a manner. Like if you look at the GDP, if you look at the cultivation, obviously there are mountain fluctuations. There are fluctuations from the monsoon, from pest attack, or anything can happen, which will ensure that nothing is happening steadily. There will be some ups and downs. So such things are bound to be wrong. Okay. So if you eliminate option 4, you can see that option A will be the answer. So it is as simple as that. Then if there are keywords like this act or the constitution or any guideline talks about this in detailed procedure, in elaborate procedure, any form of any such keywords are used, you should become cautious, because such things are bound to be wrong. Okay. For example, in this, if we look, so this is about the Environmental Protection Act of 1986. It says that it empowers the government of India. Then first statement is, state the requirement of public participation in the process of environmental protection
and the procedure and manner in which it is sought. Okay. Lay down the standards for emission of or discharge of environmental pollutant from various sources. So, hmm. so if you look at the first statement, it is saying that it is lays down the procedure and the manner in which it is sought. So it has used this procedure, or it has used a keyword procedure. So in this, and it has also used a connective. For people who have watched the YouTube video, they will be able to relate that I said that if a connective is being used, like two statements merged into one statement by using a connective like and, but those statements are bound to be wrong. So from that, we can make a statement one wrong, and a statement two is a general statement. So answer will be B. Yeah. So this now if they have again overemphasizing by using the keyword instrumental. So this is about GAGSA, Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Which of the following statements are correct? First is GAGSA is an outcome of the climate summit held in Paris 2005. I don't know. Membership of the GAGSA does not create any binding obligation. This can be right because no binding obligation is generally how international alliances are conducted. So second statement can be right. Third is India was instrumental in the creation of GAGSA. So overemphasizing, like if India was instrumental in creation of the GAGSA, obviously we would have heard of it, like because we would be reading it in the current affairs and other things. So this is overemphasizing India's role, and that is why statement third is bound to be correct. Like there are high chances that this will be correct because we have not heard of GAGSA from India perspective. So if you eliminate option third, you will see that answer B is the right answer. Yeah, so that is yeah, it is wrong. Obviously, you can eliminate from that as well. Also, that first statement is a fact. So if you eliminate first, then also you will be left with two things, now B and C. How will you arrive at the answer? Now, this is how this 21 question will show you how you can apply the PYQ, how it is repeated. So here I told you that instrumental is a keyword, and here I will tell you how this is applied. So with reference to the New York Declaration on the Forest, which of the following statement are correct? First is it was endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. This is a fact, although in this question it is right. I'm telling you. Second is it endorses a global timeline to end the loss of forest. Third is it is legally binding international declaration. So legally binding is something which raises my eyebrows because generally alliances are not legally binding. So this is something I have a doubt. Fourth is it is endorsed by government, big companies, and indigenous communities. It can be endorsed. There is no so there is little doubt on that. That fourth statement might be right because it might be endorsed by government, big companies. Fifth is India was one of the signatories at its inception. So it is again like the previous question that India was instrumental. India, and in this it is saying that India was one of the signatory at its inception. So they have just swapped the keywords. They have changed the keyword, but the tone of the statement is almost similar. That is how PYQs are used, and that is what I will show you when I will solve the 23 paper, which many people are asking to. So this is how PYQs are used. So from that perspective also, you can from that thing taking a clue from that what you can say that fifth might be wrong. Third, I told you why it will be wrong. So third is wrong, fifth is wrong. You can eliminate B, C, and D, and you can arrive at answer A. So this question many of us can get wrong because I told you that facts are wrong. So if you eliminate option one, you are left with C and D. You might arrive at a wrong answer. So again, luck uh, So, Omkar said that why to show India in a bad light. So, so this is not showing India in a bad light or a good light. This is how this works. Okay, if India, this is a logic. This is not. I am also a patriot. Okay, this is not about you showing your patriotism here. We are here to play the exam. So get back to the logic. Why I said that India cannot be. So if India were a signatory or India was instrumental in the creation of any global alliance, you would have read about this in multiple current affairs magazine.
That is what multiple current affair magazine or newspapers, you would have come across this thing. This thing will not be hitting you directly first time in the exam. This is the logic. That's how it works. So keep your emotions aside. I'm just as patriotic as you. 2017 question. In the context of solving pollution problem, what is or are the advantages of bioremediation technique? First is it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. It might be bioremediation. If you don't have any idea, then I'm from that perspective I'm talking. Now I think many people will be having an idea because this is a PYQ and many current affairs material will be having content on bioremediation. So many people read this now. But if you don't have any idea, then also first statement is such something which might be right. Second is any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. So you can see that overemphasizing readily and completely. Like it is very difficult to completely treat any bioremediation. Okay, so from that perspective, statement two has a higher chance of getting of being wrong. So I can eliminate this thing. So if I eliminate option second, statement second, then I'm left with options A and C. Now third is genetic engineering can be used to create microorganisms especially designed for bioremediation. Again, this is a question of technology, and technology is getting advanced, so obviously this can be done. So C will be the answer from that perspective. So this is how we arrive at the answer. Then if the keyword is drastically keyword is being used, then also this is about a way of overemphasizing things. So then also the statements are generally wrong. So if we look at if we read this question, due to some reason, if there is a huge fall in the population of a species of butterflies, what could be its likely consequence or consequences? First is pollination of some plants could be adversely affected. Obviously, it might be. There could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. Like this is overemphasizing that this will happen. This is bound to happen. Then third is it could lead to a fall in the population of some species of wasp, spider, and birds. So we can see that second is I told you that overemphasizing. So second might be wrong. If we eliminate second option, second statement, then we are left with option A and C. And third statement is a general that it could lead to a fall in the population of some species. Obviously, it might happen. This is a general statement, and it has a high chance of getting right. So first and third will be right, and C will be the answer. Now only. So again, in the previous in previous question, I said that only if we are coming across the word only, we need to be cautious because they're using this word only just to make it much more narrower and specific to a particular situation, so that there is a high chance of making that statement wrong. Okay, so if we read this question, with reference to the National Skills Qualification Framework, which of the statement given below is correct? First is under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. Okay, so only is the keyword. They have limited to formal learning, and we know that government is focusing on all form of learning. It is not limiting anything to one way of learning. So this is where we can make this. This is because this statement will be wrong. Second is an outcome expected from implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. So yeah, this can happen. There might be a mobility because, between the vocational and general. So this statement is a general thing, and this can be right. So first we will eliminate because it has made the statement too specific, and this will be wrong from that perspective. And then we will have the second statement is general, so this can be right. So answer will be B. Now, if again most important keyword is used, I'm just giving you all of the keywords which are used for overemphasizing.
If you will go back and again, if you try to do the same thing, you might come across one or two more such keywords which are used for overemphasizing any particular statement. So this is just to give you an idea, okay? So this, if this keyword is used, for example, in the second, you can read this later. With reference to the red sanders, sometimes seen in the news, consider the following statement. So if in the second statement, they have said that it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South Asia, South India. So this is, you can see that they are overemphasized again. So this is because this is how you can make this statement wrong. Again, if particularly, again, limiting it to a particular situation also, if particularly is being used, so they can, it is again done to ensure that that statement is wrong. So for example, if we go for the second statement, you can read this later. United Nations Convention to Combat Desertification. So it has a special particular focus on South Asia and North Africa regions, and its uh, Secretariat facilitates the allocation of major portion of financial resource to those regions. So like particular keyword has been used just to limit it to a particular scenario so that they can make it wrong. So in this way, you can eliminate second statement and you will be left with A and option A and option C. So if you look at the option third, because first is right in both scenario, only option third is the bone of contention. So for if we read the third statement, we will see that it is committed to bottom up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. So obviously, we know that whenever any alliance or whenever anything, whatever we are doing, we are focusing on the bottom up approach. That includes the people at the grassroots level, democratic decentralization. So bottom up approach is the way government functions. So this is a general thing and how normally things are done. So third statement will be can be made right. So C will be the right answer.